everyone, welcome back to Enjoy Literature, and today we shall discuss about active and passive voice. अब what do we think is कि active voice होता क्या है? Active voice जाने से पहले let's see कि verbs चाहे तो active होंगी चाहे passive होगी. तो when using active voice, the subjects are the ones performing action, that is doer. That means कि जब भी active voice हो, so in that जो subject होता है वही काम को करेगा, that is the doer. और जो passive voice में है उसमें जो subject है उस पर कुछ किया जाता है, okay, that receives an action. और उसका मतलब है कि subject उसमें object बन जाता है और object उसमें subject बन जाता है. Now, active voice sentences: God loves all men. Birds build nests. Dog eats bones. So, in these all sentences, we are having highlighted words as doer. That means कि goat, bird और dog ये सारे के सारे doer है जो कि action को कर रहे हैं. भगवान सभी को प्यार करते हैं. That means भगवान और God is the subject, is the doer of the action. Birds are building the nest. That means birds are the doer of the action. And dogs are eating the bones. So they are doer of the action. अब नेक्स्ट थिंग आती है एक्टिव वॉइस आर जस्ट सेंटेंसेस वी यूज नॉर्मली. सो दीज आर जस्ट द सेंटेंस वी यूज इन आर नॉर्मल डे. नाउ वी शैल मूव टूवर्ड्स पैसिव वॉइस. नाउ सबसे पहले हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव वॉइस? सो let's have a look at first active voice sentences which we just did. God loves all men. But the difference in passive voice is all men are loved by God. Here, God, in active voice it was the subject. This God was the subject. But now in passive voice, God is the object. It has come back. Next thing is, we have all men. Here all men is subject and this is the object. So this is the difference in which subject becomes object and object becomes subject. अब next thing आती है nets are built by birds and we did just birds build nests. So this is the thing कि हमें birds अब यहाँ पे object बन गई हैं और पहले they were the subject who did the work, लेकिन अभी काम उनके ऊपर हो रहा है. They are receiving the action. Bones are eaten by dogs. Now here dogs are what? These are the subject, but in this we have them as object. So subject become object and object become subject in passive voice. Now यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस. हम पैसिव वॉइस को यूज़ कहाँ करते हैं? हम इसको मैक्सिमम टाइम्स तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ को थोड़ा पोलाइट होकर कहना हो. बिकॉज पैसिव वॉइस इट डजेंट साउंड्स aggressive, it is less dramatic. Okay, now comes the rules for changing active into passive voice, because now even in examples we learned how subject becomes object and how object becomes subject. But what are the rules so that we can learn? Some common rules to do is that the position of subject and object of verb must be changed. What do we mean by this is कि जो subject है वो object बनेगा और जो object है वो subject बनेगा passive voice में. So this is the meaning of this first point. Second point is कि in passive voice the preposition by is added before object. That means कि let's have the example again. Here we have all men are loved by God. So all men are loved by God. In this we have by. Okay. So and in this is that added before object. Object हमारा क्या है? Object हमारा God है और object से पहले by आ जाएगा. That is preposition. Now next is the number of the verb is changed according to the number of person of the subject. That means here example is he loves me. So in that passive voice we will change am loved by him. So am is changed.
the verb is changed. Active verb followed by preposition retain the preposition. That means अगर कहीं पे preposition लगी हुई है तो वो passive में भी as it is it will be there. Example है जैसे students laughed at the clown. जो बच्चे थे वो clown पे हंसे. So now we will say the clown was laughed at by the students. Here this at is here also and here also. The preposition retains. Now for changing voice, we will have a look. We will look at a rules that change the tenses. अब tenses की change के लिए I have a table. See this table and understand it very nicely. सिंपल प्रेजेंट. अब सिंपल प्रेजेंट के अंदर एक्टिव वॉइस में लेट्स हैव अ सेंटेंस कि ही रीड्स अ बुक. वह बुक पढ़ता है. लेकिन जब हम उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे बुक इज़ रेड बाय हिम. सो हमें देखा जाए तो यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि वी हैव टू जस्ट दिस रीड्स को हमें इस रीड में बनाना है. इफ़ यहाँ पे होता ही और वी कैन सॉरी वी आर reading a book. Next is present continuous. We are reading a book or he is reading a book. We will change into is being read. So a book is being read by him. In passive voice, only we can use only third form of verb, past participle. This is also was most of important rules. We only have to use third form of verb. Let that be in present, past or future. ओके यस. सो रीड से हम लगा देंगे इज रीड आर और वी कैन से इज एम आर. ओके नाउ कम्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. यहाँ पे इज रीडिंग के साथ हम इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म रीड लगा देंगे. इन प्रेजेंट परफेक्ट में ही हैज़ रीड अ बुक. उसने मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे परफेक्ट की बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट. तो हैज़ रीड को हम हैज़ बीन रीड में कन्वर्ट करेंगे. अ बुक हैज़ बीन रीड बाय हिम. तो इसमें हमें हैज़ है हैज़ हैव प्लस हमें बीन लगाना पड़ेगा पैसिव में और थर्ड फॉर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दैट कांट बी चेंज्ड. सिंपल पास्ट ही रेड अ बुक. ही रेड अ बुक में हम अ बुक वॉज रेड बाय हिम. इसमें वही चीज़ आ गई. हमने यहाँ पे इज एम आर यूज़ करा था. हम यहाँ पे वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी. नाउ कम्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस. इन दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक एंड इन दिस वी वर हैविंग दैट ही इज़ रीडिंग अ बुक बट दैट इज़ अ बिट सेम. ही वॉज रीडिंग अ बुक. हमने वहाँ पे इज़ का इज़ एम आर बनाया था एंड हेयर वी विल यूज़ sorry there we used is mr plus being and here we'll also use being with was or were. Third form is most important. In past perfect, he had read a book. In this, we had is here. So we have to change it into been. It's something like this also. In present perfect, we had has and we have changed into been also. So here we have to use been. हमें यहाँ पे been इस्तेमाल करना है had के साथ. प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना है. देन कम सिंपल फ्यूचर आ जाता है. इन सिंपल फ्यूचर जैसे हम बोलते हैं ही विल रीड अ बुक. वह बुक पढ़ेगा. लेकिन हम जब उसे पैसे में चेंज करेंगे तो हमने विल बी लगा देना है. विल बी शैल बी और थर्ड फॉर्म. विल बी शैल बी और थर्ड फॉर्म. ओके सो यहाँ पे हमें क्या लगाना है. हमें यहाँ लगाना है विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म. देन कम्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. ही विल बी रीडिंग अ बुक. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को हम नहीं चेंज कर सकते हैं. अब आता है फ्यूचर परफेक्ट. ही विल हैव रेड अ बुक. ही विल हैव रेड अ बुक. अ बुक विल हैव बीन रेड बाय हिम. इट इज समथिंग लाइक दिस ऑल perfect tenses. In this we have to use been with that. So I hope we have learnt this. Now comes is imperative sentences. Example, we say take it away, do it tomorrow, open the window, don't leave the food uncovered. So in these cases we have to use let object plus be plus past plus past participle form. Always third form is used. Let not object be plus past participle. That means let's have this example here. Open the window.
let the window be opened. In this, let we have to use first, then we have to put the object. In this, अब open है और the window है. The window क्या है? The window is the object and we have to put the objects with the let the window and then we have to put the be, that is compulsion. हमें be डालना है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे जो भी past participle, थर्ड फॉर्म वी विल यूज opened. ओके, पास्ट पार्टिसिपल. अब आ जाता है इफ द सेंटेंस इज अ नेगेटिव. अगर नेगेटिव हो, नहीं का सेंस हो, तो हम उसे कैसे कहेंगे? देर इज एवरीथिंग सेम, बस हमें लेट नॉट लगा देना है. जैसे अगर हम बोलते हैं डू नॉट लीव द फूड अनकवर्ड, यहाँ पे इसमें डू नॉट लीव द फूड अनकवर्ड में लेट नॉट द फूड बी केप्ट अनकवर्ड, लेट नॉट द फूड बी केप्ट अनकवर्ड. फूड को अनकवर्ड नहीं छोड़ना है, तो लेट नॉट. फिर यहाँ पे जो फूड है वो ऑब्जेक्ट है, तो फूड को हम आगे लगा के आफ्टर दैट हम लिखेंगे बी. फिर क्या है? केप्ट. हेयर इज सम मिस्टेक इन दिस. वी हैड हेयर लेफ्ट लीव, सो वी विल राइट हेयर लेफ्ट, not kept. Okay, left. Be left uncovered. Okay, so this past participle, learn this rule. Very important rules are these, so learn this rule. Okay, next is interrogative sentences. It's the last transformation. Did Ravi inform you? Were you informed by Ravi? Do the children like sweets? Are sweets liked by the children? So this is just something with the tenses related. You learn this, then you practice this, you will be able to do. See, did Ravi inform you? Did Ravi, it is past. Okay, it is past indefinite, so in past indefinite we use third form. So were you informed by Ravi? Do the children like sweets? Are sweets liked by the children? Have you finished the project? So we have to change into has. We don't have to put have because have हम यूज यू के साथ यूज़ करते हैं, बट हमें यहाँ पे अब द प्रोजेक्ट आ गया है सब्जेक्ट में, तो हम इसीलिए अब द प्रोजेक्ट पे लगाएंगे, तो यहाँ पे हैज़ लगेगा. Similarly, when will they announce the date of wedding? When will the date of the wedding be announced by them? We can't use they is not used. Why? Because passive voice is naturally used, many times used to ignore the one who is doing. Like they is used here. Here that's a choice, we use or not. But when we use in exams, that we should. Now, because we have covered all our topics related to active passive voice, now let's have a practice. Help the poor man. It is imperative. Let the poor man be helped. Now comes he had bought a new car. A new car had been bought by him. A man planned a rendezvous. Yes, this rendezvous word we have done in our previous videos, and rendezvous means a meeting. Rendezvous means a meeting. New word here. A rendezvous was planned by a man. Who called you last night? By whom were you called last night? He will have read a book. A book will have been read by you. Sorry, read by him. Now comes the quiz time of our video lecture, and my father gave a watch to me. In this, the challenge is to say it into two ways. Write your answer in comment box. I will reply to your answer. If you know only one, just write that. I will tell other one also. I hope you liked our video. Like, share and comment. Thank you. Have a nice day.